बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, और जब उन्होंने जानवरों के लिए इतना अच्छा काम किया है तो इंसानों के लिए भी वो करते ही होंगे, बहुत कुछ करते होंगे। और फिर और बंदा कामयाब जब होता है जब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं उतारी गांधी मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फरक कहीं और गुम है, ओल्ड बॉय आज कहीं और गुम है। हाँ, रोज़ा नहीं, कुछ और सोच रहे थे, शायद इंडिया पहुंच गए आप। जी मैं असल में इंडिया पहुंच गया हूँ मैं, क्योंकि हाँ। मतलब जब चीज़ें खूबसूरत बिल्कुल देखता हूँ तो दिल चाहता है। यहाँ से तो आप पहुंच जी, ही गए जी, हैं ना। जी। वेलकम वेलकम। तो मैं हूँ सिमल शेख। आप मेरी थी? जी, ओहो, भूल गई। जी हाँ, बिल्कुल सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे ठीक होंगे। जल्दी से चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, नहीं बोलूँ, नहीं करिएगा बस। आए। तो रतन टाटा ड्रीम प्रोजेक्ट कम टू लाइफ विद इंडियाज फर्स्ट एडवांस्ड 24/7 एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल। जबरदस्त। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। One of India's corporate legends, Ratan Tata, has always been a passionate animal lover. We've seen him with dogs and street dogs over the last several years. He was always concerned about the lack of health care for animals. Few years ago, he thought of an idea of building a 24/7 facility with advanced machines for small animals, and today his dream has come true. We are at the Tata Trust's Small Animal Hospital in the Mahalakshmi area of Mumbai. It is a 24/7 facility that caters to all kinds of ailments in small animals. We are right now with the two most important people at the Tata Trust Small Animal Hospital, Shantanu, the director, and Dr. Thomas Heathcote, the chief veterinary doctor at the hospital. Shantanu, let me start with you. When was this idea conceived? I think it's almost been a decade since this idea was conceived. It started coming into ideation about 8 years ago. One of the key members of the Tata family felt that the country needed facilities which were quite easily available abroad, but for advanced diagnostic, advanced care, advanced facilities, we didn't really have anything here, especially with the growing population of companion animals. What's different about this is that we've got everything under one roof. So we've got all of the infrastructure because we have space to have all the infrastructure. We have an MRI scanner, a CT scanner, we have digital x-rays, we have ultrasonography, echocardiography. I mean, I could go on, we'll be here for an hour. But the difference is it's all here. So there's no more travelling around the city to get your ultrasound here and your urine sample there. And as we know, the traffic in Mumbai is not the greatest. But it means it's all here, and it's safer for the animal, it's more convenient for the animal and their companion, and it means that we can give really world-class treatment right here, right now. We are now entering the trial operations because we are promising, as a brand, as a facility and as a Tata entity, we are promising state-of-the-art advanced veterinary care. We want to ensure that every single bit of the hospital is working perfectly, all the systems are integrated, and until we are 100% confident that every single thing is married together and is functioning well, we will not be opening doors for the public. However, we are testing using our personal networks and animals that come in to see if everything is in order and if all the machines that the way they're supposed to work, are they working that way? Are the staff aligned with those machines? Are the staff aligned in operations? It's important to have a warm-up before launching this facility because we don't imagine that once we open the doors, we can ever take a pause again. The hospital is spread across 4 floors. Dr. Thomas and Shantanu will now take us around the hospital. Let's go. This is going to be the cat waiting area. Yeah, that's right. So it's just a bit calmer, a bit quieter, separated. There's no smells in here. But what's nice is as well, when you go into a small dark room, you feel forgotten sometimes. So we're kind of able to connect with them and see them. And it's just that little bit calmer in here. We've got our fully staffed pharmacy. They're just starting to kit out now.
So yeah, that'll be operational at the beginning of next week, which is great. Then we have consultation rooms. Yeah, we've got 14 consultation rooms in total, 7 on this floor and 7 upstairs. We have feline-specific consultation rooms, so it'll never smell of a dog in a cat consultation room, which again is just minimising stress for the cats. So this is the emergency room. Yeah, that's right. It's where the action happens. It'll probably be the busiest room in the hospital, so you'll never see it like this again. I know. We have kind of everything we need on hand. We have the kind of defibrillator, we have an ultrasound scanner, we've got these dangly things from the ceilings which all provide oxygen. We just plug in the pipe and we've got oxygen to hand in case we need to give an animal oxygen to help them recover. Very important because animals do need oxygen when they are terribly ill. Yeah, and when cats get stressed they pant, so they kick off more oxygen, so in a way they can make themselves worse. This is where the big toys are. We can go in. Okay, the MRI lobby. MRI lobby, but it's also the CT lobby. This is a human CT scanner. It's the same standard. It's routinely used in human hospitals. The difference is we have slightly different beds and things on here to fit an animal, but it's the same technology. So again, with this woodland scene, that's my MRI scanner, which is big and beautiful. And again, a very noisy machine and probably quite claustrophobic. However, they're unconscious in there, but we'll be able to see on our computers here what's going on with their heart rate, whether their blood pressure's fine, and make sure it's a safe MRI scan. Okay. This is what you would want to shoot. It's the view. Yes. I would like to come to a very important question. Sure. What is the cost structure? Being a pet parent myself, I know blood tests, ultrasound, all these scans are very, very expensive. What is the cost structure here? So I can't actually share the cost structure yet because we're in partnership with MCGM. We have a steering committee with them that decides the cost structure. What I can tell you is that we're a not-for-profit company and therefore we're not making huge profits because we're not allowed to make huge profits. Every rupee that's spent here goes back into the business, and because we would like to help animals who can't afford it, we want to be here for everyone. Every rupee you spend on your dog goes back into the system and round. So we're not profiteering here, we're a Tata Trust project, we're philanthropic, but that doesn't mean it can be free because I've got an MRI scanner, a CT scanner, they have to have a cost to them. What I can promise you is that we're not twice the cost of the rest of the market. We're somewhere in that same range. Okay, so tell us more about what is the kind of work you would like to do for the stray animals. So with the stray animals, we're really keen to be here. We wouldn't have vets in the building who don't love animals and who don't want to help animals. I mean, the vet's brought in a stray puppy last week and he still hasn't left. So it's very hard for us to say no. But we have one building and I only have so many vets and I only have so much capacity. And that means that we really don't want people to bring stray animals that are well, ever, because we don't have capacity for all the dogs in Mumbai. It's just not possible. We need to help the animals who need us most. So anything that's got a little boo-boo or is not quite right, that's not the dog to bring to us. If a stray has been hit by a car, yeah, of course we'll see those dogs. We're here to help. We have ambulance facilities as well. How many ambulances? We have 2 ambulances. Okay. We're not going to use them for at least 6 weeks to 8 weeks. They are going to be out there and helping dogs in Mumbai. We haven't finalised the service on that yet, but we will have those. There's pretty much nothing that we can't do here, which is a really exciting offering to have within the veterinary space. So yeah, air comes in one way and out the other, so it's perfect. Half of the machines are here. Here is where the surgery will be performed. That's correct. How many such surgery rooms? 6. 6 such surgery rooms, and we have one in the emergency room. That's right. The one downstairs is not quite the same. It's designed for smaller procedures. Stitches. Exactly. It's a very quick room. If we need to place a tube into the breathing pipes, a tracheostomy tube or a feeding tube, just little surgeries down there that need doing quickly. That's how we set up downstairs. But this is where these are the longer procedures. Yeah, right. Absolutely. Where we do orthopedics, fix broken bones, where we go into the abdomens when we need to look at stomachs and guts and that kind of stuff. जी जनाब, ये थे रतन टाटा जी और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट एनिमल्स के लिए। मैं तो एनिमल्स के लिए ये प्रोजेक्ट देख के हैरान हूँ, यकीन करें बस बहुत खुशी हो रही है, बहुत हैरानगी, बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा मतलब कामयाब लोग या तरक्की करने वाले लोग या मतलब एहसास देखे ना यार कि यार एहसास आपके अंदर है कि आप जानवरों के लिए इतना सोच रहे हैं और इतना कितने मंजिला
4 मंजिला हॉस्पिटल बना डाला है, और स्मॉल एनिमल नाम रखा है इसका ना, जिस तरह से बिल्कुल ऐसा कि ही। छोटे एनिमल्स के लिए। तो जितनी मैं रतन टाटा के बारे में जानता हूँ, जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ और इनकी इस तरह की चीज़ें, ये डोनेशन करते नहीं हैं, इन्होंने अपने इदारे बना लिए, इनकी इतनी डोनेशन है। अच्छा, यानी 66% ये लोगों को दान नहीं करते, बाकायदा अपने इदारे बना फायदा के उठा शादियां देते हैं करते उनको, शादी- अपने उससे फायदा देते हैं। अब इन्होंने ये इदारा खोल दिया तो फायदा ही हो रहा होगा ना हाँ, ये सबको। अपने ही इदारे, मतलब बिल्कुल। अपना ही डोनेशन अपने ही इदारों में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हाँ। इनको किसी को देना नहीं होता, उस फैसिलिटी पैसों हो जाती है से, उस लोगों पैसों से खुद ही कुछ करते हैं, बिल्कुल। खुद ही इनके जॉब लॉग होते हैं, खुद ही, जैसे ये हॉस्पिटल हो गया, इसी तरह से कई स्कूलें हैं, कई बच्चियों की तालीम का सिलसिला है, बहुत कुछ करते हैं। 66% बहुत होता है, जिनका 100 से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस है इनका, टाटा का 100 से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस है। तो आप इनकी इनकम का अंदाज़ा लगाएं, कहते हैं अगर ये डोनेशन वाला भी इनके अकाउंट में जमा हो जाए तो आज ये कितने इंडिया अमीर के होंगे? सबसे अमीर आदमी ये होंगे। सबसे ज़्यादा अमीर यही होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो बहुत खुशी हुई मुझे, तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा खुशी लगा। हो रही है। जहाँ पर जिस माशरे में अगर जानवरों का ये एहसास होता है तो वहाँ इंसानों की कितनी कदर होती है। जब जानवरों के लिए इतना एहसास है तो इंसानों के लिए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही। मैं बहुत दुख के हाँ। साथ एक वीडियो का जिक्र करूंगा कि कल परसों ही एकदम व्हाट्सएप पे वीडियो आई, एक सड़क पे औरत बच्चा दे रही है और दूसरी औरत ने उसको ढापा हुआ है कपड़े से, Oh my God। आगे कपड़ा किया हुआ है, और वो सड़क पे बच्चे को जन्म दे रही है। मतलब इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या होगी जहाँ पे इंसानों का ये हाल हो, और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि यहाँ जानवरों के लिए इतना सोचा जा रहा है। तो ये कौन तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगी? बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? Exactly। सिमल क्या कहेंगी आप? मैं तो बताइए। ऑलरेडी कह ही रही हूँ कि मैं इतनी खुश हुई हूँ इस चीज़ से। तो जाहिर अलग सी से बात- कहे ना, अलग से आप सब साथ उनका में साथ तो दे रही हाँ, थी। दीजिए। अपने जज्बात में साथ साथ बता अच्छा, रही थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, और जब उन्होंने जानवरों के लिए इतना अच्छा काम किया है तो इंसानों के लिए भी वो करते ही होंगे, बहुत कुछ करते होंगे। और फिर और बंदा कामयाब जब होता है जब इंसानों की, जानवरों की दुआएं लेता है। तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए कामयाब है कि ये सबकी दुआएं एहसास करते हैं, दुआएं लेते हैं। तो मैं तो बहुत खुशी हूँ। हमारे यहाँ तो आज तक ऐसा नहीं देखने को मिला। देखिए होम हैं, इदारे हैं, प्राइवेट लेवल पे लोग कर रहे हैं, जैसे किडनी का हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, SIUT है, और इंडस हॉस्पिटल बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। लेकिन ये एनिमल्स के लिए कुछ नहीं, प्राइवेट लोग कर रहे हैं। नहीं, एनिमल के लिए अभी सुना कि पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ बनाया वहाँ पर, अभी हाल ही में खबर आई है। बहरहाल ये असल में देखें, ये जो जानवर है ये तो बहुत ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है, क्योंकि बेज़बान होता है, ये अपनी कोई ना तकलीफ बता सकता है ना कुछ हो सकता है। अब हम जैसे वही वाली बात है, मैं जिक्र करता हूँ कि कंट्रीज़ का, तो मैं UK वगैरह में जाके मैंने जो यानी जानवरों के साथ जो है वो उनका बर्ताव देखा, और उनको जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं, तो वो ख़ुद आते हैं। मिसाल के तौर से आप यानी आप किसी जगह पर पार्क में बैठे हों तो ये जो कबूतर हैं या दूसरी हैं डक्स हैं, ये तमाम आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करीब घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं होता। जैसे ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जैसे ही ज़रा सा भी कोई वो कनेक्ट होता है तो वो फ़ौरन ही उड़ जाते हैं। तो उसके अंदर तमाम वाक़या सुना रहे थे आप कि वो बेटा था और वो खिड़की के ऊपर वो एक कबूतर का, हाँ, वो असल में वो मैं ये बता रहा था कि हम किसी दोस्त के घर दावत में गए, उसके लॉन में बैठे थे, तो वहाँ जो है छत के पास एक घोंसला बना हुआ था किसी परिंदे का। तो उसकी बीट की वजह से उनकी खिड़की पे कुछ थोड़ा सा वो आ रहा था, ख़राब होती थी। तो ऐसे ही नज़र पड़ी तो हमने कहा कि यार ये जो है ये ऊपर परिंदा, इसका कोई इंतज़ाम कर लेगा। यार मैं जब शिफ्ट हुआ तो मेरा इरादा हुआ इसको मैं जब मैं उसको वो करने लगा, तोड़ने लगा, तो मुझे किसी ने बताया कि ये बग़ैर परमिशन के, यहाँ की काउंसिल के, आप इसे हटा नहीं सकते। हो सकता है इसके अंदर अंडे बच्चे हों और ये तमाम चीज़ें। तो वो कहने लगे परमिशन लेने पड़े। जब मैंने परमिशन के लिए गया तो फिर उसका प्रोसेस इतना था कि मैंने कहा यार छोड़ो, वो वाली बात है। तो ये दूसरे जो कंट्री में वो जानवरों के साथ जो अमल देखते हैं, अदर कंट्री में तो ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, मैं और कंट्री का तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें डॉग्स वगैरह। अच्छा देखें, डॉग्स के बारे में बता दूं कि
दुनिया का सबसे वफादार जानवर जो है वो बिल्कुल, जानवर है। डॉग है। और अपनी जान भी दे देता है अपने मालिक के लिए। तो उसकी वहाँ जो कदर मैंने देखी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तरीके से उसको वो, हाँ मतलब जिसके मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। अच्छा, अब एक तो ये बात है कि ये बहुत अप्रिशिएट है कि उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल जो इंसानों को मुयस्सर जानवरों के लिए बुलाया। लेकिन एक बात और बताऊं तारिक, इससे ये इम्प्रेशन दुनिया में जैसे दूसरे कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं, मिसाल के तौर से जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, हाँ मेरा मकसद है कि वो तो डॉग्स तो उनके लिए अपने बच्चों की तरह होते हैं, वो अपने बच्चों की तरह गोद में लेके पालते हैं। तो अब अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है और उसका एम्प्लॉय आ रहा है, वो कहेगा यार मेरे डॉग्स को तो कोई केयर करने वाली बातें, तो यहाँ ये चीज़ें देखें, हाँ तो ये तमाम सिस्टम जो है बड़ा वो मतलब ये तो सिर्फ हमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन इसके असरात है, यानी कि कितने लॉन्ग टर्म। और दूसरा ये कि है इंसान, वो जानवर बेज़बान है, उसकी मदद करना चाहिए और उसको जो है उसकी नेचर के हिसाब से उसको डील करके उसको वो इस किस्म की अगर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह पहुंचाए तो वो भी आप बहुत खुशी हुई कि इस तरह की चीज़ें सोचने वाले, इस तरह की चीज़ें करने वाले मौजूद हैं। और मतलब इस लेवल का छोटा मोटा और ऐसे बेकार सा नहीं, हाई फाई बिल्कुल हॉस्पिटल की तरफ, जी बड़ा हॉस्पिटल की तरफ, इमरजेंसी भी है और सारी MRI की मशीनें लगी हैं, यानी कमाल है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।